So this entire structure has been designed as a 3-dimensional space frame, as you can see. The top chords and the bottom chords are square tubes, and the lateral braces in both the Z and X direction are circular tubes. This is a very typical configuration of a space frame. So the force configuration of the space frame are very beneficial. So we have the lateral force, if there is any, that would be the lateral forces 10% due to the movement of the vehicles themselves, या wind और किसी भी किस्म की जो है, they are resisted again by the truss configuration in the oblique direction जो इसमें होती है, and जो obviously gravity load है, that is the whole truss, the 3-dimensional truss which will be taking care of it. And then so you have these loads in X and Y direction. So let's look at the loading of the structure. The loading, the properties, let me explain the properties. The tubes, there are tubes on top and the bottom and the lateral ones as well. पाइप जो है वो इंटरकनेक्टिंग होते हैं, सर्कुलर. ये एक बड़ी टिपिकल कन्फिगरेशन है किसी भी स्पेस की. लोडिंग जो इसके ऊपर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. डेड लोड इज 600 पाउंड्स एंड 300 पाउंड. दिस इज द डेक लोड, एंड जो डेक लोड इसके ऊपर आना है इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट. फिर लाइव लोड जो इसके ऊपर डला हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द क्लॉज है एस्ट्रो की, which says that the design lane shall have 0.64 kip load per lane. लेन की डेफिनेशन तो 10 फुट है, बट सिंस दिस इज अ सिंगल लेन ब्रिज सो हम 0.64 ही लगा रहे हैं इसके ऊपर. 0.64 को ट्रिब्यूटरी एरियाज पर डिवाइड करें तो 320 बनता है दरमियान में, और -160 पाउंड पर फुट बनता है एजेस के ऊपर. देन ऑफ कोर्स द मूविंग लोड ऑन द ग्रिड ऑन द स्पेस फ्रेम, यू कैन सी देयर हैज बीन अ लोड जनरेशन हियर and it's been moving. ये जो लोड है ये एस्ट्रो के मुताबिक हैवीएस्ट लोड पॉसिबल है. हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ली कि इट्स अ टेम्पररी ब्रिज, इट्स बीइंग डिजाइन एज गुड एज अ परमानेंट ब्रिज, सिंस इट्स गोइंग टू बी स्टिल देयर फॉर 2 years ओनली. जो जितने भी लोड केसेस वगैरह हैं उसमें हमने ऐसा कोई फैक्टर इन नहीं किया. सो अज्यूमिंगली दिस इज मच मोर सेफर ब्रिज देन इट वुड बी जनरली अगर हम उसको सिर्फ एक टेम्पररी के तौर पर करें, बट दिस इज एज गुड एज अ परमानेंट ब्रिज. सो द ओवरऑल वेट इज 80 किप्स. लाइव लोड और डेड लोड मिला के दिस इज अराउंड 60 टन्स बन जाता है. ये इसके 12 व्हील्स हैं, 6 व्हील्स हैं, ये उसके एक्सल लोड्स हैं. ये हमने लगाया है इसके ऊपर, ये आप चेक कर लीजिएगा फाइल में है. इफ़ यू गो टू द डिज़ाइन चेक कोड, एवरी कॉम्बिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द LRFD. हमने LRFD कॉम्बिनेशंस लगाए हुए हैं. के वैल्यूज हमने 0.6 दिए बिकॉज ऑल दीज कनेक्शंस आर मोमेंट ट्रांसफरिंग. दैट इज द वैल्यू व्हेन यू गिव, यू हैव फिक्स सपोर्ट, फिक्स एंड कंडीशंस. So if you look at the design now, the utilization ratios are pretty okay. The DC ratios, आप चेक कर लीजिएगा इसको, they're pretty okay. सारे के सारे members काफ़ी safe limit में. Again, this is being designed as a permanent bridge, whereas it's not, but that you can see. Displacements are also pretty okay. If I go to the service loads, कहाँ से कहाँ तक है भैया? 43 to 55. 43 to 55 are the service load conditions. So the displacements here are not that bad. This is 2 inches only, and elastic limit में ही है, and it's well within the permissible limit. So this is the design. One more thing, the supports we've taken. We have taken this to be a fixed support for the reason कि हम इसको जब इरेक्ट करेंगे तो हम प्रोग्रेसिव तरीके से इसको हम बना सकेंगे. प्रोग्रेसिव का मतलब ये कि हम ये ग्रिड लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे. सो वी डोंट नीड एनी क्रेन, सो दिस बिकम्स वेरी इजी, एंड सिंस दिस इज मॉड्यूलर तो ये बड़े आराम से इरेक्ट हो जाएगा. वरना ये 110 का साइड पर रख के क्रेन से उठा के ऊपर रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, स्पेशली इन दीज कंडीशंस. सो दिस इज अ फिक्स सपोर्ट. और ये जो पाइल का बल्क हेड है जो सपोर्ट आएगी इधर, ये उसके ऊपर पिन कर दिया हमने. और उसकी डिटेल्स, जो कनेक्शन डिटेल्स हैं, जो इसका फटीग एनालिसिस है नोड का, वी कैन डू दैट. वी विल परफॉर्म ऑल ऑफ दैट ऑन ANSYS. फर्स्ट वी गेट योर ग्रीन सिग्नल ऑन दिस मेन फ्रेमिंग. जब आप इसको ओके करते हैं, आप कहते हैं ये ओके है, तो फिर हम वो सारे डिटेलिंग में इसकी चले जाते हैं.
Anyway, so this is the file. I'm sending you over. Let me know what you think. Thank you.